Hey दोस्तों, I'm Kalpana Jain and welcome back to my channel. Just in case if you are new here, I'll be uploading video every Monday and Thursday. So today's topic is what is forward and futures contract. This is actually a type of derivative contract, and if you guys don't know what is a derivative contract, please do watch my previous video. The link is in the description below, and this video is the continuation of that video. So let's start. So firstly, what is the meaning of forward contract? It is a contract between two parties where there is one is buyer and another one is seller, where buyer agrees to purchase at certain price and seller agrees to sell at certain price. But the only condition is the price is predetermined, that is the price has been determined while entering into the contract. So to reduce all your confusion, I have a simple solution for you, and that is to understand what is forward contract with this example. Let's consider there are two parties. One is farmer who is a seller, and another one is a wholesaler who is here a buyer. There are two parties, one is seller and one is buyer. They both enter into a contract. That contract is forward contract. So यहाँ पे forward contract हुआ है and the farmer has agreed to sell rice टू द होलसेलर. यहाँ पे क्या बेच रहे हैं वो राइस बेचेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी भी डिसाइड की गई है 5 टन और 15,000 पर टन. Although 15,000 per ton is not the market rate, I'm just giving here an example. And the date is fixed. The date is fixed का मतलब ये होता है the date of contract and the date of expiry. मतलब the contract जिस दिन expire होगा, जिस दिन से वो expire हो जाएगा, वो date भी predetermined होती है. So everything is already decided while entering into the contract. The day they enter into the contract, everything is decided. The what kind of things you have, commodities you are going to sell, what is the quantity you are going to sell, what price and at what date, everything is been predetermined. predetermined का मतलब होता है कि इसे पहले से ही तय किया जा गया होता है. और यहाँ पर एक OTC होता है. यहाँ पर मैंने यहाँ पर बीच में लिखा है OTC. OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर. OTC मीन्स ओवर द काउंटर. ओवर द काउंटर मतलब होता है कि जैसे कि नॉर्मल आप दुकान पे जाएं, यहाँ पे एक काउंटर होता है. एक्चुअल में ओवर द काउंटर इसका मीनिंग भी इसीलिए आया था क्योंकि आम भाषा में सब लोगों को समझ में आ सका. ओवर द काउंटर मतलब यहाँ पर एक काउंटर, यहाँ पर ये समझा जाता है कि एक बायर और सेलर के बीच में एक काउंटर होता है और उस काउंटर के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है. जैसे कि अभी आप नॉर्मल शॉप में जाएंगे या फिर नॉर्मल आप कहीं भी बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे जहाँ वहाँ पे एक काउंटर होगा, जहाँ पे जैसे कि कैश काउंटर, तो वहाँ पे आप ट्रेड करते हैं. जो दूसरी तरफ होता है वो सेलर होता है और जो आप होते हैं बायर हो सकते हैं या वाइजा वर्सा, ऐसा हो सकता है. इसी वजह से इसका नाम ओवर द काउंटर भी कहा जाता है. नाउ व्हाट हैपन्स नो, now the farmer and the seller, yeah, the wholesaler, both have entered into the contract. Everything is decided, but in the last moment or at the time, this wholesaler may reject the contract or may be default, or in case farmer may be also in default. So certain situation what happens, let's suppose the market price of the rice per ton is 20,000 rupees. Now the farmer thinks that if I sell this to the wholesaler, I may occur 5,000 rupees of loss. यहाँ पर फार्मर सोच रहा है कि अगर मैं इसे 15,000 में ही बेच दूँ तो मुझे 5,000 लॉस होगा, क्योंकि मैं अगर मार्केट में जाके बेचूँ तो वही राइस के मुझे 20 टन पर टन 20,000 रुपये मिलेंगे. तो यहाँ पे फार्मर क्या हो सकता है, ग्रीडीनेस की वजह से वो या फिर उसे प्रॉफिट कमाने की वजह से वो क्या कर सकता है, ही माइट डिफॉल्ट, ही माइट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. देन एट दैट टाइम द होलसेलर गोज विद द लॉस. But in case the market price goes to 12,000 per ton,
At that time, this wholesaler thinks that why should I not cancel the contract, because if I don't cancel the contract, I have to pay 3,000 extra per ton. तो यहाँ पे क्या होता है कि 3,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पे करने होंगे. सो इस वजह से क्या करते हैं, ये दोनों क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं. देर माइट बी चांसेस आई एनी वन ऑफ द पार्टी कैन कैंसल. If one party cancels, obviously the other party will get into the loss. So, what is the solution for this? And no one is here to control, no one is here to object, no one can argue on this matter, no one can do anything. So, what is the solution for this? The solution for this is nothing but futures contract. So, futures contract came into existence because of the reason that there are defaults in forward contract. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे बहुत सारे गलतियां हो रही थी, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया था. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, बट यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड. इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड. लेट्स explain this with an example. The same example. If you can see the same examples given. यहाँ पे क्या होता है, the but here there is only one difference. Here there was OTC in forward contract, but in futures contract it is stock exchange. That means futures contract is controlled by stock exchange, which makes them regulated. यहाँ पे क्या होता है कि जो भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, तो वो एक रेगुलेटेड हो जाता है. And very important and one plus point is, at the time of making a futures contract, the farmer has to not only say what he is going to sell. अभी फार्मर को बोलना पड़ता है कि मैं राइस बेचूंगा, नो. तो उसको ये भी बोलना पड़ता है कि वो कौन से क्वालिटी के, वो सोना मसूरी बेच रहा है या कोई बहुत ही कम वैल्यू का राइस बेच रहा है. वो जो भी राइस बेच रहा है, ही हैज़ टू स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ राइस ही इज सेलिंग. A grade rice or B grade rice or C grade rice, whatever it is, he has to specify. And he has to specify that he will give the rice to the wholesaler within the specified time. Everything is written. What quality, what quantity, everything is mentioned. And if in case, and also now the whole farmer has to deposit 100 rupee as a margin, and also the wholesaler has to deposit 100 rupees as a margin amount. If in case farmer defaults the amount, then this whole margin amount will go to the wholesaler. And if wholesaler defaults this, then the whole amount will go to the फार्मर. कहने का मतलब ये है कि दोनों ही पार्टीज़ को क्या होता है, मार्जिन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है. इट्स लाइक डिपॉजिट, यू हैव टू डिपॉजिट. दिस इज द रूल ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. सो यू हैव टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट. हियर इन जस्ट इन केस आई हैव गिवन 100 rupees 100 rupees, but that is not the amount of margin. It depends upon your contract. If the contract is of total value of the contract is in crores, then the margin amount will be also like that only. So it depends. I have just given an example. Both the parties has to deposit margin, that is compulsory. And if any of one party makes default or if he cancels the contract, the whole deposit will go to the other party. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर फार्मर ने कोई गलती की है या फार्मर ने कोई चालाकी करके वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तो ये पूरा मार्जिन अमाउंट होलसेलर को जाएगा, और अगर ये होलसेलर ने किया है तो रिटेलर को जाएगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो सेम
एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एक ही डिफरेंस है कि द ओनली डिफरेंस इज हियर देर इज इट इज traded with stock exchange, which makes it regulated and controlled, and there is an existence of margin amount. Margin amount is compulsory in futures contract. They both the parties has to deposit certain amount, that is called margin amount. So let's understand the difference, which is very easy. I have given a slide over here. So forward contract is not standardized. As I've said, there is no specific. The first example I have given here, the rice. Rice is predetermined. Predetermined means the quality. What quality of rice? A grade rice, B grade rice, like that. यहाँ पे क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि वहाँ पे पूरा पहले ही स्पेसिफाई किया जाता है, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नो. So in forward contract only the underlying asset is rice, but in futures contract it is correctly mentioned rice predetermined. Predetermined means what quality of rice you want, that is also specified. No mark to market. Mark to market का मतलब होता है कि means now every day they keep on updating. Here in forward contract it does not exist. Why? Because there is no stock exchange. But in forward contract there is a stock exchange, and stock exchange is updated every day. सो आपको पता ही है कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, हर दिन प्राइस ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो उसे हम कहते हैं मार्क टू मार्केट. यहाँ पे क्या होता है, फॉरवर्ड में ऐसा कोई आपके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, पर फ्यूचर्स में ऐसा प्रोविज़न है. नो मार्जिन अमाउंट. आई सेड forward contract both the parties does not deposit any money. So futures contract both the parties has to compulsorily deposit the money, and if anyone makes default the whole margin money will go to the other party, and this is not regulated. Of course there is no regulation, and here it is regulated by the stock exchange. And the one more thing which I have not mentioned, that is involvement of clearing house does not exist. Clearing house is nothing but a broker. It is like a middle person, like that. It is does not exist in forward, but it does exist in futures contract. So I hope you have understood the difference between forward and futures contract. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe to the channel, and the next video will be uploaded on Thursday. Till then, keep learning. Bye bye.